Hi, just let me change the background. Okay, we are good. Now, in the morning time, I had a session with you, like when I completed around like 10 idioms and I think around five collocations. And then we discussed something about how to find out, like how to find out the way we need to answer the questions. We discussed about all of that in a proper detail. But within those 2 hours, I could not actually explain all the words that were required to be actually told about the topic, which is health and fitness. So that is why I have brought this topic. And I must tell you that even the title shows that it's 40 words, but it is actually 42 words. So you're going to get 42 words now, like two extra words, which I forgot to actually explain about in the previous live session. We will discuss about that. Okay. Now, without any further delay or any kind of wasting of the time, let me just go to the chat and just write there in the chat and start our session. Okay. Give me a second. Okay. Yeah. We're live over there. Mm-hmm. Playing form still. It always says that. Why does she say that? Every time. Mhm. So we did 8 words from physical fitness, the term physical fitness. Hello, good morning, sir. I have actually shared a link with you to join that collaboration. I don't know like whether you got it or not because I sent it on Facebook. I sent it on Facebook because I don't have your WhatsApp account or something. But once you will get that link, if you are wish, if you wish, so that agar aap chahte ho, then you can actually collaborate with me for that particular video that I have sent you about a story, which is about Arjun, one of the main leading character in the story, and then we have another character Ravi in that. And if you're willing to join in with that one, like it would be better for me as well and for you as well. Obviously your reach would reach to lots of people as well. Whatever people are there with me, they will be connecting with you. जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो आपके साथ जुड़ेंगे, जो आपके साथ जुड़े हैं वो मेरे साथ जुड़ जाएंगे. तो अगर उन्होंने उस उनका इंटरेस्ट होएगा स्टोरी सुनने में, तो ये मेरे को पता है. So, anyways, write in the chat like what does it mean by being healthy accordingly you. What would you like to say about being healthy? Do you like to be healthy in your life or not? Or do you live a healthy life or do you lead a healthy life or not? There are different collocations that we talked about. Hi, Refe Bubs. At the rate of Refe Bubs. Hello. So we're gonna talk about 42 words because हमने अराउंड 8 वर्ड्स कर लिए थे और उसके साथ हमने कॉलोकेशंस की थी एंड अलोंग साइड वी डिड सम काइंड ऑफ व्हाट वी से idioms related to the topic because IELTS demand और कोई भी अगर टॉपिक भी डिमांड करता है कि that you should use the words which are exactly related to it. If those are not related one, those are irrelevant one, then it's of no use. I would say that people should use those words which are accordingly the topic. Oh, I'm going to bed. Have a good day. Have a good day. But it is the night here. Yeah. You can go to the bed. You can sleep. It's okay. Have, wonderful dreams. Yeah. So the word that we're going to talk about is active lifestyle. What do you mean by active lifestyle? Anybody, if you know about it, you can
write that in the chat. Like if you know anything about active lifestyle. What do you mean by active lifestyle? What is active lifestyle? What exactly does it mean when it comes to active lifestyle? If you have an answer, you can write down there. एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है? It's all about English. Yeah, I like to move, exercise. Yeah. Mhm. So, active lifestyle is all about when you actually do some kind of movement or physical activity regularly. That is active one. Active lifestyle is that you don't sit at one place. You are not living a sedentary life. You are not living like a couch potato. You're not lethargic. There are lots of words. Okay, so wonderful. Anthony Marks, thank you for replying. Like to move, exercise. That's wonderful. Thank you for answering. And this person, what's your channel about? Yeah, it's all about English. Yeah, active lifestyle, a lifestyle with regular physical activity. When we do a lot of activity or we do regular activity in our life, then that is known as active lifestyle. So, example for that would be an active lifestyle improves your body as well as the mind. It's not only improves your body but also the mind. So whenever you live an active lifestyle, lifestyle should be always active. The person who sit at one place and who do you work at Tim Hortons? No. So you want to give your resume over there? Have you ever seen me anywhere? I don't know, like from where these assholes come in the live sessions. I don't know. They are actually those. So active lifestyle is a lifestyle with the regular physical activity. We should have that one. Everyone should do exercise every day because it gives a lot of momentum and energy to you, positive vibes to you. And such people, like when they come over there and they break your momentum, then they give you the negative vibes. So don't stay with the negative vibes, throw them out. They should not be the part of your life. So let them go. Yeah. Now, the next word is high intensity workout. All the words would be related to the health and the fitness, and we have talked about it in the previous session. I'm just moving forward with the kind of stuff that was there still left. So, high intensity workout. High intensity workout would stand for something very important. That is like it would be short but very much intense exercise sessions when you do lot of hustle, lot of you know you pick up lot of weight or something like that. So high intensity workouts burn calories quickly. I would say that they burn calories quickly if you do high intensity workout. And I would say that for me, I'm not that kind of person, but I would definitely go for long runs. That is also a kind of high intensity workout where you would lose a lot of weight. Especially, I'm working on this particular core. Okay, I just want to get rid of that one. I just want to shed it. Okay, shed some calories, shed some weight, shed some you know pumpkin tummy. Yeah. Okay, so there are two words that we have done till now, that is active lifestyle and high intensity workout, which belongs to the category of physical fitness and exercise. Now we are going to move on to the another particular stream in health. I told you that healthy doesn't mean that you're doing only exercise. Healthy also means that you are eating healthy. That means your eating habits would be should be good, should be always optimum. Diet and nutrition. We will talk about diet and nutrition now. So, diet and nutrition. What do you mean by diet and nutrition? Whatever we eat, like proteins, carbohydrates, fats, or whatsoever we intake, that is
the part of the diet and the nutrition. So, what are the different words that can come in the category of diet and nutrition? If you have any word in your mind about diet and nutrition, you can just write it over there. Ice in milk, okay. Ice in milk, okay. I don't know. Yeah. Then, when we say well balanced diet, it means to say that we have all the necessary nutrients into that. So the first term or the first word, the heavy word that you should know about is well balanced diet. Well balanced diet, obviously, as I told you, that if your diet is a well balanced diet, that means there is a lot of balance in that. Balance means that you have all those necessary ingredients or necessary nutrients whichsoever are required for you to stay healthy. So that is why we call it well balanced diet. You know, eating a well balanced diet strengthens your immune system. Well balanced diet will strengthen your immune system. So that's why always eat healthy and have a well balanced diet in your life. So that is how you can remember it. Next is nutrient rich. Nutrient, then dash, then rich. Yeah, nutrient rich, or we can call it nutrient dense. Nutrient dense. Dense and rich, one and the same thing. Dense, obviously, if something is dense, that means it is too much. So rich means obviously somebody is having a lot of stuff. So that's why here we are talking about nutrients to be rich, nutrients to be too much, or nutrients to be dense. That means if your diet is nutrient dense diet, it means that the food is full of vitamins, food is full of minerals, and food is full of proteins which are required for your health. Okay. So food is full of all that stuff whichsoever is required for your body and mind. Okay. Yeah. Okay. Then the next one is like, let me give you a sentence. Vegetables and nuts are the nutrient rich foods. Vegetables and dry fruit or something like that. You can say the vegetables and nuts are the. I go nuts. That means I go crazy, but that is metaphoric. We are not going to use it like that. Next one is processed food. Processed food. Processed food. When we say processed food, obviously processed food, that means altered for convenience, which is altered for the convenience. For example, we want to increase the duration of some food. That means we are talking about the processed food. That means the food is processed and has been altered before eating. So altered, that means it could be changed or made some changes in the food for that it would stay for a long time or it would taste differently. So when we alter the food, that becomes a processed food. Too much processed food can harm health. So we should not eat too much of the processed food. हमें ज़्यादा processed food नहीं खाना चाहिए. हमें कैसा खाना खाना चाहिए? हमें वैसा खाना खाना चाहिए जिसमें कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हों या जिसमें जो कि न्यूट्रिएंट रिच हो या फिर न्यूट्रिएंट डेंस हो या फिर अगर हमारी डाइट की बात करें तो हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? It should be well balanced diet. It should always be well balanced diet. Okay. Then there is another one like whole foods. Whole foods. Whole foods. What do you mean by whole foods? Whole foods means the foods in their natural under-processed state. When you say whole foods, विच आर रॉ वन, जो कच्चे होते हैं उनको हम होल फूड्स बोल देते हैं. जैसे कि फूड इन देयर नेचुरल अनप्रोसेस्ड स्टेट, वी आर नॉट चेंजिंग देम इनटू एनी अदर फॉर्म, वी आर जस्ट कीपिंग देम as it is or we are using them as it is, so then those would be known as whole foods. So example for that would be eating whole foods is better than eating processed foods. Eating whole foods is better than eating processed foods. Yeah, that's the example. Next is calorie intake. If there would be any kind of spelling mistake or
Anything else? Then let me know that. Calorie intake. So calorie intake. What do you mean by calorie intake? Calorie intake means आप कितनी calories intake कर रहे हो, खा कितने रहे हो, कितनी calories gain कर रहे हो whenever you are eating something. Whenever you eat something, how much of the calorie do you consume or how much you take in your body? So that is calorie intake. The number of calories consumed daily would be the calorie intake. So if your calorie intake is high, then definitely you need to exercise a lot. Monitoring calorie intake helps maintain the healthy weight. Okay. Otherwise, if you are not going to focus on that one, if you're not going to keep that, or you're not going to monitor that, like how much of the calories are you taking in your body, then your body is going to become fat. Okay. So we are not going to be fat. We want to be fit and fine and healthy. You know, so that we are not going to exasperate, or we are not going to actually perspire or sweat too much without even doing any hard work. If we are doing it, then definitely, yeah, we are not in good shape. And if you are doing a lot of hard work and then the perspiration comes, that's fine. But if you are standing and you're not doing anything and still you perspire, that means there is something wrong with you. So calorie intake is something that you need to be concerned about. You need to take care of your calories or whatsoever calories you intake. Okay. So be careful about that. Next is portion control. Portion control. We are talking about health and fitness, and we are talking about whatsoever words are possible that we can use in IELTS examination. And these are the words that most probably you need to have in your vocabulary when it comes to dealing with any topic related to the speaking, related to the writing, or anything else. Like all these words should be the part of your vocabulary. It is not only for the speaking. I must tell you that these are the words which you can utilize even in your writing exam, even in your writing task too, if there is any task related to the health topic, or related to, like if the question is related to the health topic, then you can utilize these words in your question, because it is not going to help you only in IELTS speaking, but also in IELTS writing task too, or any other task as well. So it is going to obviously increase a kind of vocabulary that you have already. So portion control. What is portion control? Eating limited foods. Okay. Eating limited foods. Why limited amount of foods? Because you want to control the calorie intake, so that is why you are controlling the portion. So eating limited amount of food at a time, so you are trying to control yourself. Earlier you were intaking, like for example, you were eating 4 chapatis. Now you are eating 3 chapatis. Now then thereafter you consume less amount of energy thereafter. So depends upon like how much you want to take it, and how much you don't want to take it, and how much you want to have your tummy out of your body, or in the periphery that you want to have, or in the boundary that you want to have, or you want to have it like you want to create your own horizon for your stomach. So it is much better to have the portion control, because portion control is a key for weight management. Portion control is the key for weight management. Okay, remember that one. Somebody who wants to control the weight, somebody who wants to lose some weight, then definitely that person should have to have control on the portion that they eat. So portion control is necessary in that scenario. Next one is organic food. Organic foods. Do you know any organic food, or do you know what organic foods are? Organic foods are those foods which are not at all made from any chemical. So they don't contain any kind of chemical. They are prepared with the help of natural processes. Okay. Food grown without chemicals or pesticides would be called as organic foods. So I prefer organic foods because it's healthier. But I would say that most of the people around the world, they don't care about it. And even just for the sake of example, I said that like, I just take care of myself. I eat organic food. But no, actually, it depends, like from where you're buying the stuff. So organic food is somehow of little higher price. Then definitely people prefer, like the people who can afford, they can definitely afford the organic stuff. But most probably the people who are from the
middle class group, or a kind of, I would say that even the high strata, they try to prefer, like they don't care about it. If you are doing exercise, that's all fine, but organic food is something which we need to uh, intake, or we should eat, rather than eating something which is not organic. So there is an opposite word for organic food. Can you guess it out? I would tell you. Organic foods opposite would be something which is not a good food, and we always have a debate whenever I was, conducting some classes in India. Then we used to have a debate over junk food or not. Junk food should be the part of your diet or not. So junk food once in a while is fine, but I would say that even once in a while it's not fine, because there are lots of oils we don't even know that how it is prepared, and even when we know about it, like because of our taste buds, we go for it. But actually we need to control that thing. I think one should be careful about it, that whenever we are eating something, we need not to eat something which is junk. Okay, junk means itself trash. So junk means trash, or something which is of no use. So why we are eating junk food then? Then unhealthy food high in sugar, I don't know whether it is junk food or not. So, sugar, fat, or salt. Okay. If there is sugar, fat, or salt, then definitely it is not good for your health. So, it will contain lots of elements which you should not eat. Every time when you are having the intake of sugar, then definitely you should know that, like, how much of the sugar is actually required for your body. And I have heard somewhere, even my wife told me, because I'm kind of fan of sugar. So my wife told me that you should not actually eat sugar, because even a body produce sugar. So if it produce sugar, then definitely why we need to have it from outside. But obviously, taste buds. The main problem is our taste buds. So taste buds, let you go, and then thereafter like a devil comes into play, and devil actually haunts you and says that no, 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 sugar is good, so go for it. So then we go for the sugar. We need to control that thing. We need to control our habit of consuming the sugar the time. Whenever we eat sugar, it actually demolish lots of processes which are natural one in your body, and you become obsessed with that. And once you become obsessed with the sugar, I'm telling you, you will not be getting rid of it. You will not be able to escape from that. And if you really want to be, away from it, then definitely say that from now onwards, take an oath, we are not going to eat the sugar. But I think we can't stop. But I would say that I will stop. No, I'm stopping it from now. Uh, after this day, it's like that only. So then thereafter, superfoods. Next word is superfoods. What are superfoods? Anybody who have an answer for that? Superfoods. Okay, superfoods would be something like nutrients packed food. Okay, nutrient packed foods with healthy benefits or health benefits, or if you have health benefits in something like which are giving you all of that energy that you require from other particles of the food, like vegetable. You're not getting that one from the vegetable, and then you want to complete that one from somewhere. Then these are known as the superfoods, like blueberries or the spinach. Okay, all of them, they will be called as the superfoods because they give you a lot of energy. Whenever we eat spinach, or we eat the blueberries, which actually is very good for your eyesight. I must tell you, the people who eat blueberry, their eyesight never goes, I would say, that dull. So they won't go from the problems like hypermetropia or myopia or myopia and all that. Those problems whatsoever happens to your body or your eyes, those will not come if you are eating blueberries every day. Yeah. Then the next one is hydration. Hydration. Everybody know that what is hydration. Uh, what is hydration? Everybody know that. What is hydration? Hydration stands for something like when you are drinking hydrated, you stay hydrated. A lot of
H2O comes into play. So when H2O comes into play, that means you're drinking enough water. आप अच्छा खासा पानी पीते हैं. So that is good for your health. So you need to stay hydrated. Hydration is required, and we can say that hydration is required for the body, or stay hydrated. Hydrated. Okay. Okay. Mhm. Stay hydrated. When we say stay hydrated, that means we always should drink a lot of water. Actually, not that amount of water that you're gonna go to pee every 5 minutes. It should not be that much, but you should drink water, like at least 4 liters a day. I would say that not 2 liters a day. 2 liters is common one, everyone can drink that one. But 3 liters a day, at least it should be. So 3 liters a day. How much is the proportion that you intake? You can write in the chat, like how much of the water do you intake when it comes to drinking water. So proper hydration is essential for mental clarity and energy. You see, when we drink water, it affects your mental health as well. When you don't drink water, sorry, when you don't drink water, obviously you would lose focus. You will go through this dizziness. You will face some dizzy process with the brain, and you're gonna have, the mindset like that boy that is in the reel. Also, he says that I got to know what has gone wrong with my brain. Actually, my left brain is not right, and my right and in my right brain there is nothing left. So that's the thing, like that happens when we don't stay hydrated. We need to stay hydrated. We need to drink a lot of water. Okay. Now now after the diet and nutrients, we are moving on to the other health sector, that is weight and health management. Weight and health management. Weight and health management. Now we're going to talk about that. Weight and health management. So there are lots of words which are related to the weight. One of the word is which is wrongly pronunciated most of the time. That is obesity. So obesity, obese. He's obese. He's mota and all that. Obesity is the problem that people suffer from a lot, like obesity. Oh, sorry, Obesity. My bad. My spellings were wrong. So obesity. Obesity stands for like excess body fat. Excess means jada. Excess means jada. EXCSS. Excess body fat that may harm health. जो आपकी health को harm करेगा. So if something you know harm your health, and especially when it comes to excess your body fat, excess of the body fat, that means you are suffering from obesity. आप किस चीज से जूझ रहे हो उस टाइम पे? आप obesity से जूझ रहे हो. आपको प्रॉब्लम किस चीज की आ रही है फिर? obesity की प्रॉब्लम आ रही है भाई. आप मोटे हो रहे हो तो आपको टेंशन भी होगी, उससे बहुत सी चीजें होती हैं, स्ट्रेस भी इंक्रीज हो जाती है. तो childhood obesity is a serious problem globally. Childhood obesity, if you're gonna be obese in the childhood itself, I'm telling you, you can control it then and there itself in your childhood. And many people, even when they become adult, they try to actually capture this kind of menace. I would say it is a menace. I'm telling you, the people do not like to become fat. Obviously they can't get rid of it, that is why they stay like that. So that's why we need to get rid of this obesity stuff. I'm not saying that I'm not doing body shaming, but I'm telling you that everyone wants to be slim and trim and always want to be fit in life. So always wish good for others. If somebody is having some problems, ask them, talk to them, sit with them, and discuss whatsoever problem they are facing in their life. जो भी प्रॉब्लम उनके लाइफ में चल रही है उसके बारे में बात करें, और उससे आपको आपको भी अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा, उसका भी दिल शांत हो जाएगा. Whatsoever things are going on wrong in his heart and mind would definitely subdue a little bit, you know. चलिए, next one related to the weight is overweight. Nobody wants to be, nobody wants to be overweight. Okay, whatever weight category you are in, if you don't have that weight, then definitely you would say that I just want to get rid of that weight. So overweight means having more body weight than a healthy body.
if a healthy body says that you need to have 70 kg in this particular age, or accordingly this particular height, then if you don't have that one or you are having less of it, then it's a malnutrition. You're going through the malnutrition. And if you are having it more than that, that means it is overweight. You are overweight. So nobody wants to be overweight. Then is weight management. Weight management. It is not any company, I'm telling you. It is within us. It is within us. Everyone has to manage the weight. So weight management is controlling or maintaining healthy weight or healthy, fat that you need to have on your body. So that is known as weight management. आप weight management किसको बोलते हैं? हम उस चीज को बोलते हैं जब हमें अपना अच्छा वेट रखना होता है अपनी बॉडी के ऊपर. So that is known as healthy weight. So weight management is that. So exercise and diet are important. Exercises and diet are important for weight management. चलिए आगे चलते हैं. Burn calories. Burn calories. Burn calories. So burn calories means use energy through physical activity. Use energy through physical activities. When you are going to do a lot of physical activity and you're going to consume your energy or you're going to use your energy, then definitely you will get tired and your body will see some kind of changes and developments. So there would be some kind of developments and changes in your body just because you are burning some calories, and it is required for everyone to actually do that. So jogging helps burn calories and stay fit. So if you want to be fit in your life, you need to start jogging a little bit. Okay, little bit so that you can control the weight. I'm having some problem in the throat. Let me drink some water. Give me a break. उसके आने से मतलब हो गई है जिंदगी. Munching some black ground. चलिए. The next one is, let me close the door. I don't want to disturb my neighbors. Okay, next is, I think we have discussed about it, but somehow it was a part of the collocation. So shed some pounds. Let me write down. Shed some pounds. If you have any kind of insight about it, like there was one video that I was watching. मैं एक वीडियो देख रहा था. उस वीडियो के ऊपर चल क्या रहा था भाई. सारे जो बंदे थे उसके ऊपर वो क्या कर रहे थे, अपना नेम लिख रहे थे. वो मतलब अपने न्यू सब्सक्राइबर का नेम लिख रहे थे, उसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे. तो मैंने सोचा करके देखते हैं. फिर मैंने सोचा नहीं यार,
just give me a suggestion about it, like whether it works or not, because हैंड राइटिंग तो हमारी भी अच्छी है भाई, बट क्या करना है उसका, अचार डालें तो. Shed some pounds means to lose weight. One should always have the tendency or always have a mindset to lose the weight rather than actually gain the weight. So she goes to swimming, she goes for swimming, or she goes swimming daily to lose some weight or to shed some weight. You can use it in either way. मेरे को जो ये मेन प्रॉब्लम आ रही है ना यहाँ पे इंटरनेट की आ रही है मेरे को लग रहा है. Okay. Next is BMI. If you have any kind of answer for BMI, what does it stand for? BMI. BMI is an English word. Okay. It is body mass index. Body mass index is something um, related to the measurement of the body fat. Okay. Based on the height and weight. As I told you earlier, if your height is 6 feet or something, then you need to have that amount of weight of your body or something like that. So that is body mass index, BMI. I never checked my BMI and I never actually went to check it. So doctors often check the BMI to assess the health risk. So depending upon that, they take a decision that the person is actually suffering from some issue. Okay, so they decide it accordingly. Just give me a second. So they decide it accordingly that if somebody is having any kind of health risk or any kind of medical ailment, first of all, the first thing everyone every time whenever we go to the hospital, they check only one thing. Firstly, they let us stand by the wall and they check our height, and then they let us stand on a what we say weighing machine, and we stand on that one. हम उसके ऊपर खड़े होते हैं, and then thereafter they check it out whether the weight is fine. According to the height and the weight, they decide that one, that how much of the chances are there that somebody is actually gaining it or losing it, or depending upon the weight, then health risks they assess accordingly. Then metabolism, metabolism, metabolism. Metabolism. What is metabolism? Actually, these are the terms already we have discussed about them, but somehow I would mention them again because we are discussing particularly uh, about the weight section. Okay, weight management section. So metabolism is like body's process of converting food into energy. There, the definition was a little different, but here it is like you are trying to convert the food, okay, into the energy, and you are trying to utilize it in the form of the energy. Your metabolism, if your metabolism is good, yeah, that means it's not like you don't suffer from any digestion problem. And once you eat something, you want to go to the washroom, and then again you are energy less. So if something is happening with that one, that means your metabolism is not good. You're not able to digest your body properly, sorry, food properly, body properly, food properly. Your body is not able to actually digest your food properly. So that is why maybe there's some issue with the metabolism. So eating protein can boost metabolism. Okay, black gram that I was actually chewing right now, or I would say not chewing, I was actually munching them. I like them. Yeah. And then thereafter, chronic illness. Chronic illness. क्रोनिक तो होती है, क्रोनिक का क्या मतलब होता है? क्रोनिक का मतलब होता है खतरनाक. क्रोनिक इलनेस, इलनेस का मतलब होता है बीमारी. तो क्रोनिक इलनेस वुड बी लाइक खतरनाक बीमारी और डिजीज. ठीक है, या डिजीज भी हो सकता है इलनेस की जगह पे. इट कैन बी लाइक, आई विल राइट डिजीज, ओके, बाय पुटिंग ऑब्लिक. तो डिजीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो अगर हम क्रोनिक डिजीज की बात करते हैं, दैट मीन्स बहुत खतरनाक बीमारी, जैसे लॉन्ग लास्टिंग बीमारी हो जाती है, जैसे कैंसर हो गया, या हार्ट की कोई कार्डियोवास्कुलर आपको कोई डिजीज हो गई, या कोई भी ऐसी लॉन्ग लास्टिंग हेल्थ कंडीशंस जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो काफी देर तक रहे, बड़ी लंबी रहे, और कई बार तो खत्म ही नहीं होती. दैट इज chronic disease, the diseases which stay for the long time, and those are the long lasting diseases. Then those would be, those conditions would prevail का मतलब होता है वो बनी रहेंगी. Prevail का मतलब क्या होता है? बनी रहेंगी. Diabetes is a chronic illness.
तो बनी रहती है, वो सारी उम्र आपके चलती है आपके साथ में। ऐसा नहीं होता कि वो आपका साथ छोड़ देगी, वो हमेशा आपका साथ बनाए रखेगी। आपके आप आपके घरवाले छोड़ दे, आपकी घरवाली छोड़ दे, बच्चे छोड़ दें, लेकिन वो छोड़ेगी नहीं। वो इतना प्यार करती है आपसे। डायबिटीज़, आई एम टॉकिंग अबाउट डायबिटीज़। सो डायबिटीज़ आपको इतना प्यार करती है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसको कंट्रोल करूँ। और हर तीसरे दिन मैं फेल हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों? क्या करना चाहिए? मेरे को सजेशन दीजिए कि शुगर को कंट्रोल करें या फिर अपनी शुगर इनटेक को कंट्रोल करें, तो कैसे करें? What should we do to control that? Otherwise, everything is fine with my body, except one thing that I believe that I should control this as well. Why people say that sugar खानी नहीं चाहिए, but एक बंदा था जो बिग बॉस में भी आया था, उसने बोला था कि हमें खा लेनी चाहिए शुगर। तो तभी मैं खाता हूँ अभी। So I try to actually eat it accordingly that person, because he won lots of medal. He's a living example also. तो अगर वो खा सकता है, वो बता सकता है कि हमें खानी चाहिए, साथ-साथ में अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, रनिंग करें, कुछ भी करें, तो आप फिट रह सकते हो, देन डेफिनिटली व्हाई नॉट टू एक्चुअली कंटिन्यू डूइंग दैट? Why not to continue doing that? Okay, now the next one is preventive measures. तो प्रिवेंटिव मेजर्स हम कब करते हैं? व्हाट इज़ प्रिवेंशन? प्रिवेंशन हम बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं हम? प्रिवेंटिव, मेरे को लिखने दो पहले। प्रिवेंटिव मेजर्स। तो हम बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब इलाज से एहतियात बड़ी, ठीक है ना? एहतियात रखें, वो बढ़िया है। मैं प्रिवेंट करके रखें उस चीज़ को, लाइक एक्शंस टू प्रिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम। वो चीज़ जो आप करते हो, अगर आप कोई अपने आप को फिट रखने के लिए कोई चीज़ें करते हो, दोज़ वुड बी द प्रिवेंटिव मेजर्स। समटाइम्स डॉक्टर्स आल्सो टेल यू टू फॉलो सम प्रिवेंटिव मेजर्स। आप प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करें, तो आप ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। पर कई बार क्या होता है कि हम नहीं करते वो चीज़, हम नहीं कर पाते, जो वो टीचर बोल रहा हूँ, कि जो डॉक्टर हमें बोल रहा है। सो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो दैट प्रिवेंटिव मेजर्स समटाइम्स आर नॉट फॉलोड, हमें करने चाहिए वैसे। वैक्सिनेशंस आर प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट डिसीज़ेज़, जैसे आई डोंट नो लाइक व्हाट हैपेंड, ना रेड रेड स्पॉट हो गए थे मेरी डॉटर के, लाइक ऑल ऑफ अ सडन इट हैपेंड। मिज़ल्स की प्रॉब्लम आ गई थी, मिज़ल्स की प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी एज उतनी हुई नहीं थी, उसका वो इंजेक्शन लगा नहीं था। सो व्हेन शी डिड नॉट हैव दैट इंजेक्शन in her body, but she had to suffer a lot, and she did not say anything, and she suffered only, and never said, never cried. मेरे को बड़ी अच्छी लगी वो बात उसकी। सो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होती हैं? वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन भी टाइम पे होनी चाहिए, मतलब अगर वो टाइम से पहले उसको कुछ हो जाए, तो देन शी केम इन कॉन्टैक्ट विद समथिंग, और आपका बच्चा जो है इन चीज़ों के कॉन्टैक्ट में पहले भी आ सकता है। सो मेक श्योर दैट व्हेन इट इज़ नॉट हैपनिंग विद योर चाइल्ड। चलिए, लाइफ़स्टाइल चॉइसेस, लाइफ़स्टाइल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका लाइफ़स्टाइल चॉइस क्या है। अगर आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, देन डेफिनिटली आपकी चॉइसेस भी अच्छी होंगी। आप गंदी चीज़ तो चूज़ नहीं करोगे ना। यू आर गोइंग टू डिसाइड दैट वन, हाउ द पर्सन इज़ गोइंग टू लिव, है ना? अपने बारे में बंदा खुद सोचे दैट व्हाट आई एम गोइंग टू हैव इन माय लाइफ, व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू हैव इन माय लाइफ, दैट इज़ योर लाइफ़स्टाइल चॉइस। आपकी खुद की चॉइस है कि मैंने कैसा लाइफ़स्टाइल रखना है। मैंने एक लेथार्जिक बंदे वाला, लेज़ी बंदे वाला अपना लाइफ़स्टाइल रखना है, कि मैंने अपना लाइफ़स्टाइल ऐसा रखना है कि भाई मैं बहुत अपना ध्यान रखता हूँ, मैं एक डिसिप्लिन्ड बंदे जैसा अपना मतलब लाइफ़स्टाइल रखना है। तो लाइफ़स्टाइल चॉइसेस इज़ ऑल अबाउट दैट। People should make their lifestyle choice very carefully, because it will have long term issues or long time repercussions if they don't bother that much about it. चलिए, उसके बाद आ जाता है अगली कैटेगरी जो है हमारी है, वो है, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं बता दूं आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये लाइफ में वैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं ये बताना चाहता हूँ। इफ यू डोंट हैव दैट इन योर लाइफ, तो प्लीज इसको लाएं। तो मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस, जिस बंदे की मेंटल हेल्थ अच्छी है, जो बंदा मेंटली फिट है, जिस बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब कोई बंदा आपको कुछ बोल जाता है, तो आप उसको रिएक्ट नहीं कर पाते, रिएक्ट नहीं करते, दैट मीन्स आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल गुड है। आपको पता है कि कोई बंदे को कैसे रिएक्ट करना है, और कहाँ कैसे रिएक्ट करना है, कहाँ कैसे नहीं रिएक्ट करना है।
ठीक है? वो जो जिस बंदे को अपना मेंटल लेवल पता है, और कई बंदों जैसे मैं हूँ, आई गेट ट्रिगर समटाइम्स ईज़िली, तो कई बार नहीं होता हूँ। जब मैं हैप्पी मूड में हूँ तो मेरे मेरे सामने कोई बीन भी बजाई जाए, तो मेरे को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। बट अगर मैं गुस्से में हूँ और कोई बंदा तंग कर रहा है, जानबूझ के किसी को मेंटली हैरास कर रहा है, तो देन डेफिनिटली मैं कान के नीचे बजाऊँगा तो, और ज़रूर बजाऊँगा, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जाता फिर। तो उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू चेंज दैट हैबिट ऑफ माइन। आई डोंट लाइक दैट स्टफ कि बंदे को इतना जल्दी नहीं गुस्सा करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, बिकॉज़ शांति वाले ब मैंने देखा है जितने भी बंदे शांत हैं वो अमीर हैं। जितने भी बंदे शांत होते हैं वो बहुत अमीर होते हैं। जितने बंदों को गुस्सा जल्दी आता है उन उन बंदों के पास पैसा कम रहता है। गुस्सा बड़ा आता है ना, इसलिए कंट्रोल नहीं होता, डिसिप्लिन नहीं होता। जो जिसमें डिसिप्लिन कम होएगा वो उसके पास पैसा भी कम होएगा। ये तो सीधी-सीधी बात है भाई, समझने वाली बात है ये। ऐसी बातें बार-बार नहीं मिलती सुनने को। अभी सुनिए, मेंटल वेल-बीइंग। For your mental well-being, what do you do? For my mental well-being, I sometimes play chess. मैं चेस खेलता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, अपना फूड तैयार करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ थोड़ी बहुत। So mental well-being is all about that state of being comfortable, okay, healthy and happy mentally. जब आप mentally अपने बहुत खुश हो या आप comfortable हो अपनी life में, that means your mental well you are going through that period when your mental well-being is really fine. तो आपको कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं आ रहा उस चीज के वजह से। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक गिविंग एन एग्जांपल, मेडिटेशन इंप्रूव्स योर मेंटल वेलबींग। मेडिटेशन, और आपको एक मैं और बताता हूँ। मान लो आप ऐसे चेयर पे बैठे हो, आपने बस ऐसे बैठ के यहाँ पे ये सोचना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। मतलब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैनिफेस्ट करना है। तो मैनिफेस्ट करेंगे तो मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं सच्ची-सच्ची बातें बोलता हूँ, मैं सच बोलना चाहता हूँ, मैं सच बोलूँगा, मैं सच ही बोलता हूँ। अपने बारे में मतलब नेगेटिव नहीं बोलना, अच्छा बोलना, तो देन यू विल बी गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू, और ऑरा चेंज हो जाता है बंदे का। हाँ, मैं बता दूँ आपको, ऑरा भी चेंज हो जाता है बंदे का। चलिए, उसके बाद आ गया स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है कि जब भी आपको स्ट्रेस होती है, तो आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स कैसा आता है? तो कंट्रोलिंग और रिड्यूसिंग स्ट्रेस। जब भी आपको कोई स्ट्रेस होती है, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ दैट, मैनेज करना, उसको प्रॉपर्ली उसकी टेक केयर करना। उसको बोलते हैं कैसे कर सकते हो उसको कंट्रोल। सो कंट्रोलिंग और रिड्यूसिंग स्ट्रेस इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट। योगा एंड डीप ब्रीथिंग, सबसे बढ़िया डीप ब्रीथिंग। मैं योगा को भी नहीं बोलता, क्योंकि योगा करने के लिए भी हमें मतलब सीखने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है? सिखाया तो होता है बचपन में, पर हम छोड़ देते हैं। वी लीव दैट हैबिट, पर हमें करना चाहिए। तो योगा इज़ वेरी गुड, बट आई एम सेइंग दैट डीप ब्रीथिंग इज़ ईज़ी। तो कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो डीप ब्रीथिंग आप। एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड। एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड, एंड ऐसे 10-12 बार करें। जब भी आपको फ्री टाइम मिले, वो 10-12 बार करें आप, यू विल फील रिलैक्स्ड। ठीक है? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी मच लाइक दैट। तो योगा एंड डीप ब्रीथिंग आर इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। रिमेंबर दैट। उसके बाद आ गया माइंडफुलनेस। यही मैं वर्ड ढूंढ रहा था, मैं कितनी देर से ना दिमाग में घूम रहा था। ऐसे होता है ना कई बार हमारे दिमाग में ये काइंड डू, ये कुछ और ही हो गया, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या होती है? जब हम अपने इर्द-गिर्द जो पूरा है, उसको पूरा अटेंशन देते हैं। इर्द-गिर्द जो होती है, इर्द-गिर्द मतलब यहाँ भी, इधर भी, उधर भी। वी पे फुल अटेंशन। वी आर माइंडफुल अबाउट इट कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमारी 4 आँखें लगी हैं, बट वी आर कंप्लीटली अटेंटिव। सो पेइंग फुल अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट। जो प्रेजेंट मोमेंट चल रही है, उसको एन्जॉय कर रहे हैं हम भाई। उसको हम समझ रहे हैं पूरा, क्या हो रहा है। राइट नाउ मैं इसको एन्जॉय कर रहा हूँ। चाहे इस लाइव सेशन पे 2 बंदे भी ना आएँ, इस टाइम पे तो चलो 3 है, पर इसमें 2 बंदे, 1 भी बंदा ना आए, तो मेरे लिए मेरा काम, मेरा धर्म है, जो भगवत गीता में लिखा हुआ है। मेरा काम है कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ठीक है?
मेरा कर्म करना फ़र्ज़ बनता है, मेरा ये सोचना फ़र्ज़ ही नहीं बनता कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे। तो दैट मीन्स आई एम माइंडफुल अबाउट माई सेल्फ कि भाई मैं अपनी पूरी अटेंशन दे रहा हूँ प्रेज़ेंट टाइम पीरियड में। जो भी अगर कोई देखेगा ठीक है, नहीं देखेगा भाड़ में जाओ, कोई मकसद नहीं है मेरा इतना इतना समझाने का। क्योंकि अगर आपको वो गंदी-मंदी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं कि विदाउट एनी यूज़ अगर वही चीज़ें अच्छी लगती हैं आपको कि जिसका कोई बेनिफिट नहीं है ज़िंदगी में, तो मैं भी आपका कुछ नहीं कर सकता भाई। So I can help only those people like who really want to improve themselves. मैं उनके साथ हूँ हमेशा. If they need me, if they need my assistance in anything, then definitely I'm with them. बट अगर आप सोचे कि दैट आई वुड एक्चुअली मैं गिड़गिड़ाऊँ भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपकी ज़रूरत है मेरी ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ, कि मैं गिड़गिड़ाऊँ किसी के आगे बिकॉज़ आई एम डूइंग इट फॉर योर बेनिफिट नॉट माय बेनिफिट। मेरे बेनिफिट तो बाद में आएगा ना, जब ये सक्सेसफुल होएगा। पहले आपका बेनिफिट होएगा इफ यू रियली वांट टू एक्चुअली एक्सेल इन योर लाइफ और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, देन डेफिनिटली यू हैव टू स्टिक अराउंड। तो उससे आपको बेनिफिट होएगा, मेरे को बेनिफिट नहीं होएगा, मेरा बेनिफिट हो चुका है, मैं बैठा हूँ जहाँ पे बैठना है, ठीक है? लाइफ में। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो वन शुड एक्चुअली फोकस ऑन दिस थिंग। भाई इस चीज़ को ध्यान से रखो कि भाई आपको करना है से चेंज करनी है अपनी हैबिट्स। चलिए आगे बात करते हैं कि भाई क्या बोलते हैं उसको अगला वर्ड जो है बर्नआउट। बर्नआउट। नेक्स्ट वर्ड इज़ बर्नआउट। बर्नआउट मतलब दैट मीन्स एक्सट्रीम टायर्डनेस फॉर वर्क और स्ट्रेस। अगर आपको टायर्डनेस हुई पड़ी है वर्क और स्ट्रेस की वजह से, वर्क वर्क में आप थके हुए हो और आपको एंग्जायटी हुई है किसी चीज़ की, that is burnout. There is certain sort of burnout that you're going through, and extreme tiredness from the work or stress. That is known as that. Okay. Now, next word is self care. सेल्फ केयर क्या होता है? अपने आप की खुद की केयर करना, दैट इज सेल्फ केयर। ठीक है जी। टेक केयर ऑफ वन सेल्फ वंस ओन हेल्थ, दैट इज नोन एज सेल्फ केयर। किसी और की केयर करो मत करो, पर अपनी केयर ज़रूर करो, ठीक है? अपनी खुद की सेहत की केयर ज़रूर करो। उसके बाद आ गया वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस। देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस में ना बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं। एक फ़िनलैंड नाम की कंट्री है, कभी सर्च मार के देखना। फ़िनलैंड नाम की जो कंट्री है, उसमें बहुत से अच्छे बेनिफिट्स भी हैं। मतलब वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो अल्टीमेट है। तो वर्क लाइफ बैलेंस दैट मीन्स इक्वल फोकस ऑन जॉब एंड द पर्सनल लाइफ, दैट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस। मतलब आपका दोनों तरफ प्रॉपर फोकस है, आप काम कर पा रहे हो। अगर मान लो मैं 7 दिन काम कर रहा हूँ, देन ऑब्वियसली मैं अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाऊँगा, ठीक है? बट अगर मेरे पास है ही 4 दिन है काम करने के लिए, 3 दिन मैं अपनी फैमिली को देखूँगा, देन डेफिनिटली आई विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स माय सोसाइटी एज़ वेल एज़ माय फैमिली। तो मैं फैमिली के लिए भी काम करूँगा। समझ रहे हो? So all these words really matter the most. Matter, not matter the most, matter. That thing really matter. Fatigue, mental fatigue. अगला आ गया मेंटल फिटिग। जब आपका दिमाग थका हुआ है, द टायर्डनेस ऑफ द माइंड ड्यू टू द एक्सेसिव थिंकिंग और स्ट्रेस। जब आपका दिमाग थका हुआ है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सोच लिया है, बहुत ज़्यादा सोचने की ओवर थिंकिंग की वजह से और स्ट्रेस की वजह से अगर आप ज़्यादा सोचते हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग थ्रू द मेंटल फिटिग। कोई पांडु है, जो आ रहा है वो जा रहा है। पांडु है, कोई आ रहा है वो जा रहा है। प्लीज़ ना ही आए तो बेटर है, ठीक है? अगर नहीं खड़े हो ना यहाँ पे, भाई ज़बरदस्ती किसी को नहीं है कुछ भी। इमोशनल वेल-बीइंग, इमोशनल वेल-बीइंग। अगर आप अच्छा महसूस करते हो, यू फील गुड एंड इमोशनली स्टेबल और आप जल्दी हार नहीं मानते और आप जल्दी अपना दिल नहीं छोड़ते, दैट मीन्स योर इमोशनल वेल-बीइंग इज़ गुड। आपकी इमोशनल वेल-बीइंग जो है, वो गुड है। स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड बूस्ट इमोशनल वेल-बीइंग। अगर आप दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो, देन डेफिनिटली आपको आपके पास बहुत सी ऐसी मूवमेंट्स आ जाती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं। सो दैट इज़ व्हाई दैट गिव्स यू इमोशनल वेल-बीइंग। ओके, वो इमोशनल वेल-बीइंग देती है आपको। मतलब अच्छे दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें,
जितना ज़्यादा हो सके। देन उसके बाद आ गया हमारे पास रेज़िलियंस। रेज़िलियंस रेज़िलियंस का मतलब होता है एबिलिटी टू कोप विद चैलेंजेस एंड रिकवर क्विकली। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में उसको फेस करना, कोप करना और उससे डील करना, देन रिकवर क्विकली, उससे बाहर निकलना। दैट मीन्स you are quite a resilient person. You are able to actually cope with the tough situation in your life. There were many situations in my life as well, like when I had been through a lot of tough time. But resilience ही जो चीज़ है, जो आपको उससे बाहर निकालती है और आपका पॉजिटिव माइंडसेट। अगला जो वर्ड है वो है ही पॉजिटिव माइंडसेट है। पॉजिटिव माइंडसेट। ये सारे जो वर्ड्स हैं, these are all the parts of health and fitness. पॉजिटिव माइंडसेट भी आपको एक अच्छी हेल्थ या आपको अच्छी फिटनेस देता है। थिंकिंग ऑप्टिमिस्टिकली अबाउट लाइफ, दैट इज पॉजिटिव माइंडसेट। जब आप किसी भी चीज के लिए ऑप्टिमिस्टिक होके सोचते हो, आशावादी होके सोचते हो। ऑप्टिमिज्म किसको बोलते हैं? आशावादी होने को बोलते हैं। तो अगर आप ऑप्टिमिस्ट हो, एक अच्छे ऑप्टिमिस्ट और एक आशावादी बंदे हो, देन डेफिनिटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉजिटिव माइंडसेट मीन्स दैट पॉजिटिव माइंडसेट इज ऑलवेज अबाउट बीइंग ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ। अ पॉजिटिव माइंडसेट ऑलवेज helps us improve health as well as even it increases the motivational strength. ओके। उसके बाद हमारा आ जाता है जो लास्ट सेक्टर है जिसके बारे में हमने बात करनी है, जो हमारे 10 वर्ड रह गए हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बचा, ठीक है? हेल्थ का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम पहले कंप्लीट कर लें। हेल्थ प्रैक्टिसेस एंड आई वुड से दैट these words would be related to the health practices, or I would give you some kind of tips about it. Okay. Now, what we say regular checkups. रेगुलर चेकअप्स हमें सबको पता है कि क्या होता है रेगुलर चेकअप। जब अगर हमें डॉक्टर ने बोल बोल दिया कि आपको रेगुलर चेकअप के लिए मतलब होता है ना, 3 महीने बाद आपकी बॉडी का चेकअप होना जरूरी है। दैट इज रेगुलर चेकअप काइंड ऑफ। ठीक है, रेगुलर चेकअप्स के लिए हमें जाना चाहिए। हमें लेथार्जिक नहीं बनना चाहिए। रूटीनली मेडिकल एग्जामिनेशन इज मेडिकल सॉरी दिस रेगुलर चेकअप। सो रेगुलर चेकअप्स कैन डिटेक्ट इलनेसेस अर्लियर। तो अगर आप उसको पहले ही अपनी बॉडी को चेकअप करवाते रहते हो, देन दैट इज वेल एंड गुड। तो वो आपको बेनिफिट ही देगा। उसके बाद आ गया हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स और प्रिवेंटिव सॉरी हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव मेजर्स तो चलो पता ही है हमें क्या होता है कि अगर हम मेजर्स करते हैं, वैसे उनको बोलते हैं मेजर्स, मतलब हमने कोई स्टेप्स लिए जिससे हम अपने आप को बचा के रखते हैं हेल्थ हेल्थ को। दैट इज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। Measures to prevent disease. Those are one and the same thing. Preventive measures or preventive healthcare is one and the same thing. Measures to prevent the disease. Preventive healthcare is better than treatment after illness. तो बाद में इलाज करवाने की बजाय आप क्या करो कि अपना पहले ही हेल्थ का ध्यान रख लो। ध्यान ध्यान रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सबके लिए अच्छा रहेगा, किसके लिए अच्छा नहीं रहेगा? ऑब्वियसली अगर हम अपना ध्यान रखते हैं, वी टेक ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स इनटू द कंसिडरेंस, तो डेफिनिटली हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है, होलिस्टिक हेल्थ। हेल्थ होलिस्टिक हेल्थ, होलिस्टिक मतलब कंसिडर बॉडी माइंड एंड लाइफस्टाइल, मतलब सारा कुछ ही आ गया इसमें। होलिस्टिक का मतलब सारी जो सेक्टर ऑफ लाइफ है वो आ जाते हैं इसमें, कंसिडरिंग बॉडी माइंड एंड lifestyle together. Holistic health emphasizes both mental and physical fitness. ठीक है जी। उसके बाद आ गया हमारे पास वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, इसको भी बोल देते हैं। दो वर्ड है इसके, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम अपने आप को इम्यूनाइज कर लेते हैं। जब कोई बंदा अपनी वैक्सीनेशन करवाता है, तो वो बंदा अपने आप को इम्यून कर लेता है। इम्यून का मतलब होता है अपनी सहन शक्ति बढ़ जाती है, बॉडी की सहन शक्ति बढ़ जाती है किसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। मतलब इतनी ज़्यादा वो दृढ़ हो जाती है बॉडी कि आप आपको महसूस ही नहीं होता कि दैट यू आर गोइंग थ्रू एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ। ठीक है? उसके बाद आता है बैलेंस डाइट।
बैलेंस डाइट होती है जो अगर हम बैलेंस डाइट नहीं बैलेंस लाइफस्टाइल सॉरी माय बैड बैलेंस्ड डाइट तो हो गया ना बैलेंस्ड लाइफस्टाइल बैलेंस्ड लाइफस्टाइल अगर किसी का लाइफस्टाइल बैलेंस है दैट मींस हेल्थ मिक्स ऑफ वर्क रेस्ट एंड एक्टिविटी वो बंदा बैलेंस लाइफस्टाइल मतलब हर एक चीज को हैंडल कर पा रहा है दैट इज अ बैलेंस लाइफस्टाइल दैट मींस अ बैलेंस लाइफस्टाइल इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ बोथ ओके तो चलिए उसके बाद आ गया हमारा स्लीप हाइजीन 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 स्लीप हाइजीन दैट मीन्स आप अच्छी नींद ले रहे हो आपको लाइक गुड स्लीप हैबिट्स हैं मेरी तो बड़ी गंदी हैबिट्स हैं तो आई नीड टू एक्चुअली बी केयरफुल अबाउट माय स्लीप हेल्दी हैबिट्स हेल्दी हैबिट्स हेल्दी हैबिट्स होती हैं अच्छी बातें करना अच्छे गेम्स खेलना रूटीन एक्शंस दैट प्रमोट हेल्थ दैट इज द पार्ट ऑफ अच्छी हैबिट्स और हेल्दी हैबिट्स ठीक है बॉडी माइंड एंड बॉडी बॉडी कनेक्शन माइंड एंड बॉडी कनेक्शन अगर माइंड और बॉडी का आपस में कनेक्शन है हाउ मेंटल स्टेट अफेक्ट्स फिजिकल हेल्थ माइंड एंड बॉडी कनेक्शन अगर आपका माइंड अच्छा है तो आपकी बॉडी भी अच्छा काम करेगी अगर आपका माइंड अच्छा नहीं है तो बॉडी भी काम नहीं प्रॉपर करेगी स्ट्रेस कैन वीकन द इम्यून सिस्टम ड्यू टू द माइंड बॉडी कनेक्शन चलिए उसके बाद आएगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट इसके बाद आएगा वैसे एक्चुअली सेकंड लास्ट आएगा ये डिटॉक्स या फिर क्लिंज भी बोल देते हैं इसको क्लिंज डिटॉक्स और क्लिंज से आपको पता लग जाएगा डिटॉक्स और क्लिंज वन एंड द सेम थिंग ही है तो डिटॉक्स का मतलब रिमूविंग टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी नेचुरली so detox your body every now and then drink some aloe vera or eat some aloe vera sometimes it cleans your body like to the most yeah last but not the least that is preventive nutrition 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 प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन क्या होता है ईटिंग टू प्रिवेंट इलनेस एंड मेंटेन हेल्थ मतलब अगर आप कोई चीज खाते हो अपनी इलनेस से बचने के लिए या फिर अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव इलनेस सॉरी प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द की फॉर द प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन चलिए आई let me tell you that I did not like the way the people actually do not comment in the live session. I don't know. I'm coming for you guys. I'm helping you out. Okay. So if you think so that you don't want to get the help, you can just share it with somebody else who really want to get the help. So share it with them and so that they can get the help. And thank you for the people who are here itself. बट दे डोंट पार्टिसिपेट वो पार्टिसिपेट नहीं करते मेरे को अच्छा नहीं लगता कि अगर मतलब कल्ला बंदा बोल के क्या करेगा चार डालेगा so that is much better that if somebody is going to participate like that and I must tell you that a lot of people must be thinking that this person is still not somewhere. Mm. So let them think what they want to think. So remember health and wellness are not only important in life but also a common ELDS topic. Don't consider it anything else. It is not only important in your life, but also a healthy topic that is required in your ELDS. So keep practicing both for your body and your band score. It is related to your band score as well. तो ये बात है जी चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर एक्चुअली ज्वाइनिंग इन मेरे पास एंड्रॉयड फोन होता तो मैं शायद गेमिंग भी करता मेरे पास आईफोन होने की वजह से मेरे को बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं थैंक यू वेरी मच हैव अ गुड वन टेक केयर